Begin with today's session. Look at the first question. With reference to Diego Garcia and Chagos archipelago, consider the following statements. The first statement says the archipelago is located about 500 kilometers south of Maldives in the Indian Ocean and consists of around 58 islands. Absolutely correct. Second statement says Diego Garcia is the largest island of the Chagos archipelago and lies about 7 degrees south of the equator. Again, correct. The third statement says the International Court of Justice in 2019 ruled that the United Kingdom has full legal sovereignty over the Chagos Island. This is absolutely incorrect. It was just opposite actually. The International Court of Justice, which is also known as the World Court, right, which is a civil court. So, International Court of Justice in 2019 ruled in favor of Mauritius, not in favor of United Kingdom, right? So, the third statement is incorrect here. So, correct answer would be A for Ahmedabad. Now, the question is that why we picked up this MCQ. रीजन क्या है डिएगो गार्सिया को पिक करने के पीछे? देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लें और ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका में शामिल हो जाए। अब उन्होंने ग्रीनलैंड को इक्वेट किया है यहाँ पे डिएगो गार्सिया के साथ में, चागोस आर्किपेलागो के साथ में। ये रीजन है इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द मैप। दिस वन इज डिएगो गार्सिया। इट इज अ हाईली स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन and it is the part of the British Indian Ocean Territory, BIOT, right? And still the Diego Garcia remains with USA and United Kingdom. तो यूनाइटेड किंगडम जो है उसके सॉवरिन कंट्रोल में है और ऑपरेशनलाइज कौन कर रहा है उसको? ऑपरेशनलाइज कर रहा है यूएसए। तो यहाँ पे अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवल बेस है। बेसिकली चाइना और कम्युनिस्ट कंट्रीज की एक्टिविटीज को चेक करने में अमेरिका को हेल्प मिलती है और अमेरिका इंडियन ओशन में भी अपने प्रभुत्व, अपने कंट्रोल को बनाए रखता है। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट to introduce a dedicated legislation to curb the hate speeches and hate crimes? First of all, at the union level, we do not have any like unified legislation on the hate speech. तो हेट स्पीच तो नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 विच डील्स विद द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, राइट? तो जैसे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19(1)(a) में, तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या प्रोवाइड करता है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और बेसिकली इसके रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं? वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। तो टोटल 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट? तो जितने भी लॉज हैं जो कि फ्री स्पीच को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से स्टेम आउट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो यहां करेक्ट आंसर है सी फॉर कैलकाटा, मींस कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। सो कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग आउट सच legislation. So now let's move on to the explanation part. So you can see here India has addressed hate speech primarily through the judicial interventions, expert committees and law commission recommendations. For example, अगर हम बात करें तहसीन पूनावाला केस की, so in तहसीन पूनावाला versus Union of India case 2018, Supreme Court issued detailed guidelines to tackle the mob violence and lynching, including the appointment of a district nodal officer, preventive, remedial, and punitive measures under the IPC Section 153 and Section 295A. Similarly, अगर हम 267th लॉ कमीशन रिपोर्ट की बात करें 2017 में, so it recommended the insertion of two different sections, Section 153C and Section 505A, right? सो हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स पे एक प्राइवेट मेंबर बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। क्लियर? सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। इस पे कई कमिटीज भी बनी है हेट स्पीचेस को लेकर के, बट वास्तविकता ये है कि ये सब पेपर में है, राइट? ये सब पेपर किंग है। रियलिटी में हेट स्पीच को लेकर के कुछ भी नहीं किया गया और किया भी कैसे जाए, राइट? इंडिया में पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा हेट स्पीचेस शायद ही कोई और देता हो, राइट? तो चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस हों, पॉलिटिकल प्लेसेस हों, राइट? कोई भी ऐसा शायद ही प्लेस हो जो कि हेट स्पीचेस से अछूता हो। सो बेस बरुआ कमेटी बनी थी 2014 में, विश्वनाथन कमेटी बनी थी 2015 में। दोनों ने ही हेट स्पीचेस को एड्रेस करने की कोशिश की, उसको डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश की, राइट? रिसेंटली एन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द हिंदू व्हिच डील्स विद द हेट स्पीच, राइट? चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the next question, question number 3. Part 15 of the Constitution of India deals with
the elections, right? So part 15 from Article 324 to Article 329 deals with the elections and electoral process, right? अब प्रेजेंट में ओवरऑल लाइक कंट्री में एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और एसआईआर को लेकर के जिस तरह से जैसे आपने देखा होगा भी वेस्ट बंगाल में डिस्प्यूट हुआ था, राइट? तो एसआईआर की वजह से इलेक्शन मशीनरी पूरी न्यूज़ में है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी explanation part. You can see here that part 15 of the Constitution of India from Article 324 to Article 329 deals with elections. It provides the constitutional framework for the conduct of elections to the parliament, state legislature and the offices of the president and the vice president, right? अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की या फिर हम बात करें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, तो इनके इलेक्शंस को कंडक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? वो ड्यूटी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की. याद रखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी नहीं है. So look at the next question. With reference to the location of Greenland, consider the following statements. The first statement says Baffin Bay is situated to the east of Greenland. No, that's not correct. Second statement is the Greenland Sea is situated to the south of Greenland. Again incorrect. The third statement says Iceland is to the southwest of the Greenland. No, that's not correct. The fourth statement says the Labrador Sea is situated to the south of Greenland. This is correct. Question is, how many of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be only one. So only one statement is correct. मतलब statement number 4 अकेला एक ऐसा statement है जो यहाँ पे correct है. Quantum पूछा हुआ था यहाँ पे, तो correct answer हो जाएगा A for Ahmedabad, only one, right? Now let's move on to the explanation part. So look at the explanation. The Baffin Bay lies to the west of Greenland. यहाँ आप देख सकते हैं, this is Baffin Bay. It lies to the west, not to the east. So the first statement is incorrect here. Second statement says, so Greenland Sea lies mainly to the east and northeast of the Greenland. तो ये रहा Greenland Sea, ये east and northeast में है, right? So this is also incorrect. जो statement में लिखा था, then Iceland is located to the southeast of Greenland, right? तो यहाँ पे south and southeast की तरफ आपको मिलेगा Iceland. लास्ट स्टेटमेंट है लेब्राडोर सी लाइज टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड. तो यहां पे लेब्राडोर सी है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर? अब न्यूज में क्यों है आप जानते हैं, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं. डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं, सबसे बड़ा फैक्टर वही है. तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना कि सिर्फ दुश्मनों को दुश्मन बनाया है, उन्होंने अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया है, राइट? दुश्मनों से दुश्मनी तो सभी निभाते हैं, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इतने आगे पहुंच गए हैं कि वो अपने दोस्तों को भी उन्होंने दुश्मन बना लिया है, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 5. The Global Risk Report 2026 is published by which of the following organizations? Correct answer is World Economic Forum. So WEF is the correct answer. Recently, this report was published. This report categorized various threats to India and to the world. तो इंडिया के केस में साइबर सिक्योरिटी जो है दैट रिमेन्स द सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट. सो साइबर सिक्योरिटी, income inequality and insufficient public services, the top risk in India. Do remember cyber security, income inequality and insufficient public services, right? So the Global Risk Report 2026 identifies cyber security as the biggest risk for India, while the geo-economic confrontation is ranked as the most severe risk at the global level. तो याद रखिएगा, इंडिया के अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो दैट इज साइबर सिक्योरिटी, देन इनकम इनइक्वालिटी एंड देन द इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज. लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो टॉप लेवल पे क्या है, दैट इज जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन. फॉर एग्जांपल लाइक द यूएस चाइना ट्रेड वॉर, देन द यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So with reference to Brahmani River, consider the following statements. The first statement says it is formed by the confluence of the Sank and the South Koel rivers near Raurkela in Odisha. Absolutely correct. The second statement says it flows entirely within the state of Odisha. देखिए absolute statement है and you have to be attentive. See, it flows through three states, Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand, not only in the state of Odisha. तो यहाँ पे second statement is incorrect. Third statement says both the sources
of the Brahmani river are on the छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये जो आप दोनों सोर्सेज देख रहे हैं, दोनों रिवर्स देख रहे हैं इसके, यहाँ पे संख रिवर और साउथ कोयल रिवर के, जो कि ब्राह्मणी रिवर को फॉर्म करते हैं, ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। दोनों ही रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है यहाँ पे, वन एंड थर्ड। सो बी फॉर बॉम्बे वुड बी द करेक्ट आंसर। Now let's move on to the explanation part. So you can see the explanation here, why we picked up this question. Satellite data show that India's major deltas sinking due to human activity. A new study has reported that 77% of Brahmani River Delta and 69% of the Mahanadi River Delta are sinking at more than 5 mm per year. Clear? Which is a major cause of concern. So both rivers originate from Chota Nagpur Plateau. Do remember. Clear? विच वन? संक एंड साउथ कोयल। तो ये बेसिकली किसके किस पर्टिकुलर रिवर का जो है वो मेन सोर्स है? दैट इज द ब्राह्मणी रिवर। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय which of the following institutions? Correct answer is Niti Aayog. So Niti Aayog publishes the Trade Watch quarterly report. Recently, this report was published, and that is the reason we framed this question. So you can see here, the fifth edition was launched by Dr. Arvind Virmani, the member of Niti Aayog, and provides a data-driven assessment of India's trade performance with the thematic analysis, right? चाहे वो automotive exports हो, या फिर global value chains हो, या फिर service trade and technology intensive exports हो। तो इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। इट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8। The contempt plea filed by the ex-CAPF officials against the Union Home Secretary relates to the non-implementation of which of the Supreme Court's judgment? Correct answer here is, that is संजय प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी ने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, दैट इज यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स। काफी रेप्यूटेड जॉब है। सो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स ज्यादातर अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस एग्जामिनेशन को भी देते हैं। आपको भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं, या आपको अगर आपको यूपीएससी इंटरव्यू का टेस्ट लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो इससे बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट? सो यूपीएससी सीएपीएफ में लाइक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो टर्म है, बेसिकली ये सेंट्रल पुलिस है जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, सो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन एसएसबी, right? Then CRPF, Central Reserve Police Force, which is the largest CAPF, right? Then you have the NSG, the National Security Guards. Clear? तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। बेसिकली व्हाट हैपेंड इन दिस केस? इन दिस केस संजय प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ग्रेजुअली एंड स्टेडीली आप क्या करिए कि जो इसकी जो हायर पोजीशंस हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड अबव, जो भी यहाँ पे पोजीशंस हैं जिसको आईपीएस लॉबी यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, तो आईपीएस लॉबी का कंट्रोल जो है आप उसको धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्टेडीली आप इसको कम करिए। और सीएपीएफ का जो डेडिकेटेड कैडर है, जो कि ग्राउंड लेवल से आया है, तो ग्राउंड लेवल से असिस्टेंट कमांडेंट्स जो हैं, उनको उनको ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड सिचुएशन का ज़्यादा बेटर नॉलेज है, तो आप उन्हीं को यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल करने दीजिए, ना कि आईपीएस ऑफिसर्स को। तो अब काफ़ी वक्त हो चुका है इस जजमेंट को आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो किसका चार्ज बन रहा है? कॉन्टेम्प्ट का चार्ज बन रहा है यार, राइट? तो यहाँ पे याद रखिएगा, एज पर आर्टिकल 129 of the Constitution of India, Supreme Court is the court of record, and Supreme Court has the power to punish for its contempt. Clear? So Article 129 for the contempt of Supreme Court, and Article 215 is for the contempt of the high courts, right? And we have a dedicated law for the contempt of court, that is Contempt of Court Act of 1971, which defines contempt, and like it categorizes contempt in two parts. First one is civil contempt, and the second one is the criminal contempt, right? So do remember, correct answer क्या होगा? संजय प्रकाश and others versus यूनियन ऑफ इंडिया केस। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का बहुत ही प्रोमिनेंट केस है, ये पुलिस रिफॉर्म्स से लेकर के है, राइट? याद रखिएगा। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Explanation यहाँ पे देख सकते हैं आप. Why we picked up this question. So ex-CAPF officials filed contempt plea against the Home Secretary for the non-implementation of the Supreme Court's order. So the top court ordered progressive reduction of the IPS deputation in CAPF up to the level of the Inspector General in the next 2 years and sought a time bound review of the cadre and service rules in 6 months. Right. तो basically जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक का जो लेवल है, राइट, यहाँ पे जो आईपीएस लॉबी का जो सेचुरेशन, उनका जो कमांड एंड कंट्रोल है, उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जाए, ना कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड अबव के ऊपर. राइट. तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था उसको थोड़ा सा यहाँ पे अमेंड कर लीजिएगा. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the next question. Question number 9. So with reference to Himalayan cryosphere, consider the following statements. The first statement says, the cryosphere includes all the frozen water on Earth, including the glaciers, snow, and the ice sheets. Absolutely correct. That is the meaning of cryosphere. The second statement says the Hindu Kush Himalaya. The Hindu Kush Himalayan region contains the largest volume of the ice in the world. No, that's not the largest volume, right? That is the third largest after the polar region. तो polar region में अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद अगर हम बात करें तो हिंदू कुश रीजन जो है दैट इज द लार्जेस्ट क्रायोस्फीयर इन द वर्ल्ड. क्लियर. तो हिंदू कुश को कई बार हम थर्ड पोल भी कहते हैं. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. The third statement says the Himalayan cryosphere is the source of major river systems like the Indus, Ganges, and Brahmaputra. Absolutely correct. The fourth statement is it acts as a natural reservoir by releasing melt water during the dry pre-monsoon periods. Absolutely correct. So 1, 3, and 4. These are the correct statements. So question is which of these statements given above is oblique are correct. So B for Bombay would be the correct answer. 1, 3, and 4. Right. So you can see the explanation part, the Himalayas laid bare how vanishing snow and ice are reshaping Asia's water tower, right? So the cryosphere includes all the frozen forms of water such as glaciers, snow, ice caps, and permafrost. Then the Hindu Kush Himalaya has the largest volume of the ice outside the polar regions, not in the entire world. Clear? Chaliye. Now let's move on to the next question. So this is the last question of today's session. The question number 10, with reference to the headline inflation, consider the following statements. The first statement says, it measures the rise in the price across the goods only and does not include services. No, that's not the case. It is incorrect. See, it includes both goods and services. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Not include services, right? तो both goods and services, right? The first statement is incorrect here. It is based on the consumer price index. This is absolutely correct. The question is, which of these statements given above is oblique are correct? तो correct answer क्या होगा? B for Bombay. Only second statement is correct here. Understood? ठीक है. So look at the explanation why we picked up this question. So old CPI inflation rises to 1.33% in December, ends 2025 outside the RBI's target range. राइट. अब आरबीआई का टारगेट रेंज क्या है? दैट इज 4 ± 2. याद रखिएगा, है ना. सो 4 ± 2 मतलब मैक्स रेंज कितना हुआ? 6%. और जो लीस्ट परसेंटेज है वो कितना हुआ? मिनिमम, दैट वुड बी 2%. राइट. सो याद रखिएगा 4 ± 2. ऑल्सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड द कोर इन्फ्लेशन. राइट. तो कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में वी इंक्लूड ऑल दी कमोडिटीज. तो गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही, इसमें फूड भी शामिल है, इसमें फ्यूल भी शामिल है, मतलब जो कि हाईली वोलेटाइल इन नेचर है. कोर इन्फ्लेशन क्या करता है? कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स द वोलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे फूड एंड फ्यूल. वाई? क्योंकि फूड एंड फ्यूल जो है ये हाईली वोलेटाइल इन नेचर है. इनके प्राइसेस जो हैं वो लाइक मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं. तो याद रखिएगा कोर इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे फूड एंड फ्यूल दोनों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता है कोर इन्फ्लेशन. अंडरस्टूड? याद रखिएगा इसको, दैट आरबीआई यूजेज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. क्लियर. एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ. सो दोस्तों, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ में. एंड प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपने कंपेनियंस के साथ में जो भी सिविल सर्विसेज की प्रेप कर रहे हैं. राइट. ये चैनल उनके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है. ये इनिशिएटिव, आई एम टेलिंग यू, दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में दोस्तों. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.